Hello children, a very good morning to all of you. Welcome to your bio class. In bio, we have started chapter 10, reaching the age of adolescence. So we have discussed few things in the chapter. Let me revise it in short. We have seen that what is adolescence. We had discussed about that. So adolescence is the change in the body which leads to reproductive maturity. Means it is that period in life of an individual, boy or girl, when the body undergoes changes, and this changes brings about the reproductive maturity. Okay, that is the adolescence, or that is adolescent period. And in this period, the child is neither an adult, the individual is neither a child nor an adult. Means ये ऐसा लाइफ का समय है जब द बॉय और द गर्ल वो ना तो बच्चा है ना ही बड़ा है, बीच वाला एज. इट इज़ ऑल्सो नोन एज टीन एज. It is also known as teenage. Okay, and the adolescent, the boy or the girl who is in this period, they are known as teenagers. Generally the period is from 11 years and lasts till 18 to 19 years. Okay, and ये टाइम जब चेंजेस आता है आपके बॉडी में, इट इज़ नोन एज द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. मीन्स इट इज़ नोन एज प्यूबर्टी. आपके लाइफ में वो पीरियड जब आपके बॉडी में चेंजेस आप आके आपका रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ गया है, दैट इज़ नोन एज प्यूबर्टी. And in during puberty, what changes occur, we were seeing one by one. Like first one, we were discussing increase in height. Okay, you might have noticed that a baby is born, his height increases. एक बच्चा जब born होता है धीरे धीरे उसका height बढ़ता है. लेकिन बहुतों में देखोगे कि ये हाइट, इंक्रीज इन हाइट सडनली एक एज के बाद बहुत जल्दी होना शुरू हो जाता है. आपके फ्रेंड्स को ही आप नोटिस कर किए होगे कभी कि क्लास 1 2 3 4 में उसका हाइट उतना ज़्यादा नहीं था, अचानक 7 8 में आने के बाद हाइट बढ़ जाता है. सो दिस इज़ ड्यू टू द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, क्योंकि उसके बॉडी में वो टाइम आ गया है जब बॉडी चेंजेस दिखा रहा है. एंड वन ऑफ द चेंजेस इज़ द इंक्रीज इन हाइट. Suddenly some boy or girl will show his height has increased suddenly. Okay, so these are all sign of onset of puberty. Okay, and how the height increases, the at this time the long bones, that is the bones of the arms and leg, elongate and make a person tall. How the height is increased? Because the bones of the hands and leg, they will increase in they will elongate and become longer in length. Okay, now many times we have seen that girls, they grow faster than boys, but at about 18 years, means when this adolescent period is over, both of them reaches the maximum height. Okay, and उसके बाद फिर height बढ़ना उस age के बाद, teenagers का age के बाद, adolescent age के बाद height आपका बढ़ना रुक जाता है. तो जो भी ग्रोथ होना है हाइट का, वो आपके इसी पीरियड 11 से 18 19 के बीच में आपका हाइट बढ़ता है. एंड सम बॉय एंड गर्ल, दे मे ग्रो वेरी फास्ट एंड सम दे मे ग्रो स्लोली. ओके, सो and height also depends on one more thing, the genes. If your parents are tall, then the baby is going to be a tall baby. But if one of the parents is short, जैसे मम्मी अगर शॉर्ट हाइट की है, पापा टॉल है, तो हो सकता है बच्चे शॉर्ट हाइट के हों. सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द जीन, because we had seen in cell chapter that genes are responsible for carrying of characters from parents to the offspring. तो आपके पेरेंट्स का क्या हाइट है उसमें भी डिपेंड करता है आप कितने लंबे होगे. एंड ड्यूरिंग दिस एडोलेसेंट, व्हेन द height increases, it is the growing age, so we have to have a proper nutritious food, which we will see afterwards in the chapter. Now the second change is change in body shape. Okay, change in body shape, this is the second change which we are going to see during puberty. Now body shape क्या है, देखोगे बच्चे जो क्लास 7 8 में है, एडोलेसेंट पीरियड में है, उन लोग का जो शोल्डर्स है वो चौड़ा हो जाता है, इट बिकम्स ब्रॉड. ओके, देन द स्टूडेंट्स हु आर इन द जूनियर क्लास,
And then girls, they will show waist, कमर का जो portion है that increases in this increase, it becomes wider. And in boys the muscles grow more prominently than in the girls, thus changes occurring in adolescent in boys and girls are different. Boys, they will have a broad shoulder as they reach the adolescent period, and girls, they will have a wider this below the waist region will become wider. Okay, this is the second change in the body shape. Third, it is very important, it is the change in voice. आपने खुद नोटिस किया होगा कि एक एज के बाद, क्लास 6-7 के बाद, आपका वॉइस जो है गर्ल्स एंड बॉयज़ में डिफरेंट हो जाता है. बॉयज़ का आवाज़ क्या भारी हो जाता है एंड गर्ल्स का श्रिल हो जाता है, हल्का पतला हो जाता है, हाई पिच वॉइस हो जाता है. वाई दिस हैपन्स? बिकॉज वी नो दैट देयर इज़ अ वॉइस बॉक्स in the neck region that is also known as larynx that begins to grow, and boys, they develop large voice boxes. Okay, and देखोगे boys में ये जो voice box है, larynx है, it becomes prominent, it can be seen, it protrudes out. आप notice करोगे, आईने के सामने खड़े होकर notice करना, ये जो है गले में इस जगह पे boys का एक ऐसा हड्डी जैसा आपको प्रोट्रूड किया हुआ दिखेगा, दैट इज़ द वॉइस बॉक्स फॉर बॉयज़. बॉयज़ में ये प्रोमिनेंट हो जाता है एंड दिस इज़ नोन एज एडम्स एप्पल. ओके, so the larynx or the voice box in boys, it is known as the Adam's apple also, and in girls it is hardly visible from outside. गर्ल्स का वॉइस कैसे हो जाता है व्हेन दे रीच द एज ऑफ एडोलेसेंस, दे बिकम हाई पिच्ड, मतलब पतला श्रिल वॉइस हो जाता है. All right. And sometimes what happens that the voice of adolescent boys uh, becomes very hoarse, एकदम भारी मोटा आवाज हो जाता है. And then what happens as the adolescent period is complete, then the voice अपना जो जितना उसको change होना था, it changes and then it becomes permanent. So this is the third change during puberty. Now fourth change is increased in activity of sweat and sebaceous glands. We know that there are sweat glands in our body. वो gland जिससे पसीना निकलता है. उसके अलावा और एक gland होता है sebaceous gland, which is the oil gland. एंड यू नो जैसे बॉयज़ एंड गर्ल्स टीनेजर्स में रीच करते हैं एज ऑफ टीनेजर्स, पिंपल्स, आपके चेहरे में पिंपल्स निकलना शुरू हो जाता है, एक्ने निकलना शुरू हो जाता है. दिस इज़ ड्यू टू द मोर सेक्रीशन ऑफ ऑयल ग्लैंड्स. ओके, इसलिए पिंपल्स निकलता है क्योंकि आपका जो सेपेशियस ग्लैंड है वो ज़्यादा ऑयल सेक्रीट करना शुरू कर देता है. मीन्स एज puberty reaches in boys and girls, the sweat glands and the sebaceous glands, they become more active. All right, now the next one, the fifth one, it is the development of sex organs. This is the fifth change during puberty. हमने देखा था कि reproduction में in male the testes, the penis, they are the sex organs in male, and in female it is the ovaries. So as a boy and girl reaches the age of puberty, this sex organs matures completely and reproductive age starts in both boys and girls. And the sixth one, which is the marked change reaching the age of puberty, is the reaching mental, intellectual and emotional maturity. You will see that adolescence is a period of change in person's way of thinking. जैसे आप जैसे छोटे में सोचते थे, लेकिन जब आप एडोलेसेंस पीरियड में रीच कर जाओगे आपका वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो जाएगा. जैसे आप खुद का ही एग्जांपल लो, नाउ यू थिंक अबाउट योर कैरियर, यू थिंक दैट यस आई शुड डू दिस, तो आपका थिंकिंग का, सोचने का नज़रिया, देयर इज़ अ चेंज. दिस इज़ अ चेंज ऑफ एडोलेसेंट पीरियड. Then intellectual development takes place and they tend to spend considerable time thinking. मीन्स आप सोचने में ज़्यादा समय व्यतीत करते हो, ये भी एक चेंज है एडोलेसेंस का. देन आपका ब्रेन जो है, इट हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर लर्निंग. आपको सीखने की, सोचने की इच्छा ज़्यादा होता है. एंड then there is emotional maturity also. Sometimes you will feel insecure
क्योंकि आपकी बॉडी में चेंजेस हो रहा है, तो आप उस चेंज को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, सो यू विल फील इनसिक्योर। बिकॉज जैसे गर्ल्स इनसिक्योर हो सकती हैं कि उसके बॉडी में चेंजेस हो रहा है, बॉयज़ को लग रहा है मेरे बॉडी के अंदर क्या चेंजेस हो रहा है। सो इट इज़ नथिंग टू वरी, दीज आर ऑल नेचुरल थिंग्स विच आर गोइंग टू हैपन in all human body, so you should not be insecure, rather you should accept these changes. जैसे अगर आपका हाइट नहीं बढ़ता है, that is also a problem. So ये जो changes है, it is a natural thing, let this changes happen. Okay, so these are few changes which takes place with the onset of puberty. So today we will do only this much, next in the next class.